Okay, namaskar everyone, and lovely evening to everyone. This is the live session that I decided to do at this evening around 9 o'clock. This is especially for people who are busy; they don't get time in the afternoon. Hopefully, in coming days, whenever there is a live session, I will try to do during the weekend, that is on Sundays. That'll be great. So I'm just waiting for some more people to join in, and then I will start the video actually why I was going to make this particular live session. So I hope the voice is clear. If you have any problem about the voice and everything, can you please comment so I'll know that everything is fine. Okay. If you have any connection problem or something, please you can mention here. I'm waiting for some more people to join in so we can start the session. That what was the purpose of doing this live session? Actually, I have been getting so many calls lately from various places. Many people ask me about the online courses. That is some questions I've taken. Okay, there is Tanushri. I'm from Murshidabad. Hi, Tanushri. How are you doing? So, people who stay far, actually, जो लोग दूर रहते हैं, especially like you said, Murshidabad. Some people stay in Sikkim from Kolkata. तो कई सारे लोग मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ऑनलाइन सेशन शुरू कीजिए तो इसी के माध्यम से थ्रू दिस चैनल आई एम थिंकिंग दैट आई विल स्टार्ट सम लाइव सेशंस फॉर दोज पीपल आल्सो so that the people who stay far can also get some benefit out of it. Normally, I don't recommend for the online classes because for public speaking, online platform will not be the right place. But if if it is not possible for people, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, option ही नहीं है. So there is no other option than going for live sessions. At least once in a week we can have some live sessions. I will be covering up some topics of grammar and some basic tips that you can work upon. ऐसा कुछ हम लोग माध्यम से हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. I will try my best on that. सो आज कुछ एजेंडा था जिसके लिए मैंने ये लाइव सेशन किया. इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में करूंगा क्योंकि हो सकता है कई मे बी सम मिसकम्युनिकेशन हैपन. सो लेट्स गो फॉर बोथ द लैंग्वेजेस. तो पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया वो है कि ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में. तो एक तो मैंने आपको थोड़ा सा आंसर अभी दे दिया कि ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं वो नॉर्मली पब्लिक स्पीकिंग के लिए सही नहीं होते हैं. But if you want to go for any grammar, if you want to go for some kind of, sentence construction correction, some pronunciation, for that you can go for online training. But if you want to improve your, public speaking skills, अगर आप चाहते हैं कि अपना confidence grow कर सकें, लोगों के सामने comfortably बात कर सकें, presentations दे सकें, उन सब केसेस में थोड़ा सा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है वो ठीक नहीं लगता है मुझे. इस सेशन में मैं ट्राई करूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप पूछिए. तो अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट आंसरिंग आल्सो क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए थे. तो एक तो मैंने आपको अभी बता दिया कि ऑनलाइन कोर्सेज को लेके मेरी राय क्या है, आपको करना चाहिए कि नहीं. लेकिन जो थोड़ा मोड़ा हेल्प होगा वो मैं आपको जरूर करूंगा वंस इन अ वीक. इस तरह से कुछ सेशंस देके ताकि जो नहीं आ सकते हैं उनको बेनिफिट मिल सके. ये दैट आई विल ट्राई. तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था. एक और क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहूंगा कि जब हम लोग स्पीकिंग करते हैं तो हेजिटेशन क्यों होता है. लेकिन मैं लिख सकता हूँ. आई कैन राइट एंड व्हाइल राइटिंग आई एम ग्रामेटिकली आल्सो करेक्ट. लेकिन वही चीज जब बोलने का मामला आता है तो मुझसे गलती क्यों होती है. तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप लिखते हैं तो वहां पर आपके ऊपर कोई हेजिटेशन नहीं होता है. कोई पब्लिक
प्रेशर नहीं होता है, कोई फियर नहीं होता है. सो व्हेन यू राइटिंग यू हैव योर ओन जोन, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव योर ओन पेपर, पेन, and whatever you're writing, you have an option to take your own time. Plus, whatever you have written there, if something is, like there's a misspelling, or if there is some kind of a correction, that you can do it. But while speaking, that's not the case. Okay, once again here, the question is Sunday classes available? Yes, we are trying to start Sunday classes soon for people who cannot attend the weekday classes. तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए. अगर एक ग्रुप में फॉर्म कर लेता हूँ तो डेफिनेटली वी कैन हैव संडे क्लासेस. आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए, आपके डिटेल्स भेजिए, एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई समथिंग टू फिगर आउट फॉर दिस संडे क्लासेस, डेफिनेटली. तो मैं बात कर रहा था आपसे कि क्यों ऐसा होता है कि लिखते वक्त तो हम अच्छा लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते. तो वही हेजिटेशन और पब्लिक फियर होता है आपके ऊपर. और लिखते वक्त आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको करेक्ट कर सको. बोलते वक्त ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता है. सो द हेजिटेशन इज द बिगेस्ट रीजन. सेकेंडली, आपको लिखने का तो एक्सपीरियंस होता है, बचपन से हम लिखते आ रहे हैं. लेकिन जब मामला आता है पब्लिक स्पीकिंग का, कई लोगों को इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता है. इसीलिए वही चीज जो हम लिख पाते हैं बोल नहीं पाते हैं. तो एक तो ये मैंने इसका आंसर दे दिया आपको. एक और क्वेश्चन है, ये हमें लिया है, इसमें पूछा गया है कि अ, कोई भी कोर्स अगर मुझे ज्वाइन करना हो तो मैं कैसे ज्वाइन करूं, मैं कैसे समझूं कि ये कोर्स मेरे लिए सही है, ये पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही है. तो द राइट आंसर टू दिस इज, first you need to analyze that what is your goal, what you want to achieve. Your achieve is just to improve your grammar, or you want to improve your personality, you want to enhance your communication skills. आप क्या चाहते हैं? हमेशा देखिए जो क्लास का जो साइज होता है वो कैसा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर कोई क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, अगर वो क्लासेस भरी हुई है, तो आपका ग्रामर का गोल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आप जो चाहते हैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो, वो होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं. आपको कोई ट्रेनर ऐसा चाहिए होता है जो थोड़ा आपको पर्सनल टच भी दे, जो आप पे पर्सनल अटेंशन दे. तो जब आप कोई पब्लिक स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करते हो तो देखिए उसकी स्ट्रेंथ कैसी है. मिनिमम लोग उसमें होने चाहिए, 10-15, मैक्सिमम 17 के आसपास, ज्यादा लोग नहीं. ज्यादा होने से क्या होगा, ट्रेनर भी आपको आप पे ध्यान नहीं दे सकता है, आपकी कंडीशन को एनालाइज नहीं कर सकता है, एंड रियली इट विल बिकम चैलेंजिंग फॉर बोथ द पार्टीज. सो कैसे क्लास ज्वाइन करें, तो ये मैं आपको आंसर दे दिया इसका, किस तरह से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं. कोई और अगर आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज आप यहाँ पूछ सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट आंसरिंग दैट. क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कुछ और लोग ज्वाइन करें तो मैं उसके आंसर दे दूं. वैसे भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, जो लोग लेट आ रहे हैं वो भी इसको देख के उनको उनका आंसर मिल ही जाएगा. जस्टिक इंस्टीट्यूट आपने कब स्टार्ट किया और आपका ट्रेनिंग का पैटर्न क्या है? ओके, नाउ Justic Institute we started in the year 2013. And what was the purpose of starting this? Actually, I'm from a corporate background, and I have been training for a very long time for voice and accent neutralization. I was into linguistics. So यही मेरा area रहा है training का. So when I was doing it, I saw that many people in general they also lack public speaking skills. Secondary जो In the market, actually uh, अगर आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है तो प्लीज एक बार मैसेज लिख दीजिए ताकि आई विल अंडरस्टैंड दैट माय वॉइस इज क्लियर टू यू. आई होप द वॉइस इज क्लियर. ओके, सो व्हाट वाज द पर्पस, इसका पर्पस क्या था कि हमने जस्ट स्पीक स्टार्ट किया. तो ये बता रहा था आपको मैं. आई वाज, थैंक यू सो मच तनुश्री. तो पर्पस ये था कि जो लोग पब्लिक स्पीकिंग में वीक हैं, वो किसी भी मेरे पास कई सेक्टर से लोग आते हैं, वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, some are from education department, teachers, doctors.
So मैं देखता हूँ कि they are well versed with their subject, they are very good in that. But when it comes to speaking, they lack in that area. They're not that good in communication skills. तो इससे काफी फर्क पड़ता है। तो अगर आप अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। Suppose you come from a background where you are working in a law firm, आप law में अच्छे हैं, but how many time will you talk to people in your law language? तो इसके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना ही चाहिए ताकि आप औरों से भी कनेक्ट कर सकें। तो यही था हमारा पर्पस जस्ट स्पीक स्टार्ट करना है कि लोग इस स्किल को सीख सकें, लोगों के सामने कंफर्टेबली आके अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, जो भी थॉट्स है उसको ब्यूटीफुली अपने सेंटेंसेस में फ्रेम करके लोगों के सामने बात कर सकें। तो यही था पर्पस हमारा और मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी को ये स्किल आना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग ना आने की वजह से कितने सारे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। सो दैट इज द बेसिक रीजन। और इट डजेंट मैटर आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए। मेरा मानना है कि जो भी इंसान पब्लिक स्पीकिंग सीखता है, जिसके अंदर ये स्किल होती है, वो ऑटोमैटिकली अपने क्राउड से ऊपर उठ जाता है। यू ऑटोमैटिकली कम इन दैट लाइमलाइट इवन फॉर इंटरव्यू यू गोइंग। इफ यू वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ बेटर वे, so that for you that interview will be very easy, and for that person to hire you will be very easy because he understands you what you're trying to say. ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप रोबोटिक हो, आप ठीक से अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, तो कोई आपको क्यों हायर करेगा? तो किसी भी सेक्टर में आपको, वर्किंग, नॉन वर्किंग, जॉब एस्पिरेंट, यू गोइंग फॉर योर गवर्नमेंट सेक्टर, हर किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए मेरे मानने में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि कितना समय मुझे लगेगा पब्लिक स्पीकिंग सीखने में, हाउ मच टाइम डू आई हैव टू डिवोट टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स? नाउ देयर इज नो सेट पैरामीटर, बट since we have been doing it for a very long time, so we know as an average around 4 months to 10 months or 8 months. That's the projected time a person takes to learn this skill. कई लोग बहुत सारे क्लेम्स करते हैं। आपने आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे एड्स देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड देखे होंगे कि आप 200 रुपए में, 300 रुपए में इंग्लिश सीख जाइए, 2 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे। तो ये सब स्कैम में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। टू लर्न एनी लैंग्वेज द फर्स्ट थिंग इज टाइम, यू नीड टू डिवोट सम टाइम। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने का मौका बहुत मिलता है, लाइक इन योर फ्रेंड सर्कल, एट योर वर्क प्लेस, so there are higher chances that you will develop this skill in 2 months or 4 months also. But if you have a circle where you don't get enough time, enough scope to speak in English, मुझे नहीं लगता कि आप जल्दी ये स्किल सीख पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। फिर आपकी पर्सनैलिटी पे मैटर करता है, लाइक सपोज इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, यू आर रिजर्व पर्सन, you don't open up very easily in front of people, it will be big challenge for you. मेरे पास कई सालों से मैं ये ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कई लोग हैं जो क्लास आते हैं, बैठते हैं, वो जो एफर्ट्स होता है वो उनके तरफ से नहीं आता, तो एज अ ट्रेनर मुझे उनको पुश करना पड़ता है। तो जिनको मैं पुश कर रहा हूँ, जिनको मैं फोर्स कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं देखता हूँ कि उनको टाइम लगता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी कई ऐसे लोग होते हैं जो पहले से बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, दे हैव द ज़ील टू लर्न। वो 2 घंटे की क्लास को पूरा यूटिलाइज करते हैं, वो बात कर रहे होते हैं, वो लोगों से मिंगल होते हैं, दे हैव लिटिल लाइक एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, उनको मोल्ड करना बहुत आसान होता है। So for them, I think 3 months, 4 months, probably less than that also, they gain fluency, they gain that desired, outcome. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई इंट्रोवर्ट है, रिजर्व है, जिसको मौका मिलता ही नहीं इंग्लिश बोलने का, उन लोगों के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो कितना टाइम लगता है? मिनिमम 4 मंथ से लेके मैक्सिमम 8 to 10 मंथ तक का आपको टाइम लग सकता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज ग्रामर? नाउ ग्रामर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, ये तो आपकी लैंग्वेज का बैकबोन है, उसके बिना तो आप लैंग्वेज बोल ही नहीं सकते। लेकिन focusing too much on grammar is also absolutely wrong. The first thing is that you need to be comfortable with this language. कई लोग लैंग्वेज से ही कंफर्टेबल नहीं है, वो पहले से ही मान लेते हैं कि ये डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, इजी ऑप्शन ढूंढते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रामर, टेंसेस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, दिन भर ग्रामर ग्रामर ग्रामर। तो उससे ग्रामर तो आपका स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन आपको बोलने की जो प्रैक्टिस है वो आपको नहीं हो रही है। तो मेरा मानना है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा है कि हाउ यू प्रैक्टिस इन द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ग्रामर, आप कितना यूज करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कितना समय मुझे देना चाहिए लैंग्वेज के लिए? तो मेरे हिसाब से दिन में अगर आप 1 घंटा देते हो, 1 घंटा, जैसे कि क्लास आने के लिए आपने 2 घंटा दे दिया, दैट इज़ ओके। पर वो 1 घंटा जो एडिशनल आप देते हो सीखने के लिए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। So 1 hour, it doesn't matter what you do, you are listening or you're talking to somebody, these things is my guru mantra for you, that 1 hour you have to give. And some people tell you to read this, read that, newspaper, books. Reading will not give you fluency. Reading is only for developing that vocabulary. तो वो vocabulary को अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। आजकल सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, आप वीडियोस देखो, बहुत बेस्ट है ये। उसमें लिसनिंग भी होता है, आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा होता है। साथ में सम न्यू वर्ड्स यू लर्न, जॉट डाउन दोज़ वर्ड्स। So these are the homework that you can do, and you can improve your own communication skills. How to manage the time, sir? Manage the time, definitely ये बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग काम करते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अभी जॉब बन चुका है, दैट इज योर प्रायोरिटी। In that case, I suggest you that the late evenings that you have, if you get time, or the early mornings, so those time are the most important thing for you. Give 1 hour to yourself. And it's not like if you're having lunch, for example, if you're having dinner, uh, the best thing is that at that time you can plug in your headsets and listen to some audio. Nowadays we have many, online, listening apps also. No need to read the books, but you can listen to the books. Podcasts are there. There are various platforms. This is also one way. And if you have a friend, a colleague who's also keen in learning English, call up that guy and spend half an hour at least half an hour to talk to them. It doesn't matter how broken is your English, but at least talk to each other. That is one thing. एक और चीज होता है कि कितना जरूरी है एक्सेंट जब आप बात करते हैं, तो कितना जरूरी है अपने लैंग्वेज को न्यूट्रलाइज कर लेना। बहुत जरूरी होता है, ये मेरा मानना है कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो लेकिन अगर आपका जो एक्सेंट है वो न्यूट्रल नहीं है, जैसे कि एक होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको, एमटीआई भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप बंगाली बोलते हो, आपका बंगाली टोन आ रहा है, नेपाली टोन आ रहा है, बिहारी टोन आ रहा है, तो ये टोन से एक प्रॉब्लम होता है कि जब सुनने वाला होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको सीरियस नहीं लेता है, तो सोचता है कि ये स्ट्रगल कर रहा है, दो यू नो इंग्लिश, दो यू आर फ्लुएंट, बट बिकॉज ऑफ योर मदर टंग इन्फ्लुएंस, the accent that you have, that spoils the impression completely. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपने जो जो एक्सेंट है उस पर भी काम करना चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ग्रामर डेफिनेटली, प्रैक्टिस, more practice, listening. So it's an all round package where you have to work upon. It's very important. आपके अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। तो 2 क्वेश्चन जो मेरे आए वो हो गए, संडे को क्लास मैं ट्राई करूंगा संडे को क्लास करने के लिए, अबाउट द कैबिन क्रू इंटरव्यू। ओके, ओके, आई हैव दैट क्वेश्चन इन माय लिस्ट, दैट अबाउट द कैबिन क्रू इंटरव्यू। कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो कोर्स हम लोग कराते हैं, ये डेफिनेटली पहले तो आपके कम्युनिकेशन पे काम करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे काम करता है। कैबिन क्रू इंटरव्यू में सबसे पहले जो वो देखते हैं, तो वो होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आप उस रोल में फिट होते हैं कि नहीं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि देयर आर मेनी पीपल, लाइक just because of the glamour, just because others are doing it, they just want to become cabin crew. That's perfectly okay, that's the career. But for that, what is required, that is very important. You need to have good communication skills, you need to be well groomed, you need to be well aware, you need to have outspoken personality। कोई भी क्वेश्चन आया खुल के उसको आप बोल सको बिना किसी हेजिटेशन के। एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक पूरा पैकेज होना चाहिए, तब आके उसको क्लियर आप करते हो। मेरे इंस्टीट्यूट से जितने भी लोग वो इंटरव्यू क्लियर किए हैं, उसमें एक चीज तो कॉमन देखता हूं मैं, they were like they wanted to do, they wanted to change, so change is that one thing that is very important। कैबिन क्रू का कोई ऐसा खास कोर्सेज वगैरह नहीं होते हैं, जैसे कई जगहों पे देखता हूँ कि कैबिन क्रू कोर्स चल रहा है,
कोई आपको बोलता है कि फायर ड्रिल कराता है, कोई बोलता है कि आप ऐसे पेड़ उठाइए, ऐसे कस्टमर से बात करना है, ये सब कुछ नहीं होता है। आपको सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है आपकी हाइट आप चेक कर लीजिए। देखो बहुत लोग आते हैं, उनकी हाइट ही क्वालीफाई नहीं हो रही होती है, फिर वो आके कई लोग रोते हैं, कोई डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कोई सोचते हैं कि नहीं मैं तो फिर ट्राई करूँगा। तो आप सब कुछ तो ग्रूम कर सकते हो अपने आप को, हाइट कैसे ग्रो करोगे ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये एस्पिरेशन मन में डालने से पहले, कैबिन क्रू बनना है ये सोचने से पहले, अपनी हाइट एक बार चेक कर लीजिए। वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, ये सब ठीक हो जाता है। आपकी इंग्लिश खराब है, ये ठीक हो जाता है। आपको बस अपनी पहले हाइट चेक कर लेनी चाहिए। कोई कोई चेहरे पे कोई मार्क वगैरह ना हो, ये आपको चेक कर लेना चाहिए। तो ये सब अगर है तो थोड़ा समय देकर, थोड़ा टाइम देकर डेफ़िनेटली आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ये कोई बहुत ऐसा टफ इंटरव्यू नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी, व्हाट विल यू डू विथ योर फर्स्ट सैलरी, व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। पर उसको आप कितनी ब्यूटीफुल तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, आप कितने लाइवली हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, all these things make you a package, deserving package for a cabin crew. तो इन चीज़ों पे काम करो। हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से आता है, वो डज़न्ट मैटर, उसको हम पहले देते हैं कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। ये मेरा पहला पहला रोल है, क्योंकि हमारा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम ही है जस्ट स्पीक। आपको बोलना ही है। इफ यू दैट हैज़ द बेस्ट क्वालिटी अ ह्यूमन बीइंग हैज़ स्पीकिंग, तो पहले हम उस पे काम करते हैं। अ पर्सन शुड बिकम आउटस्पोकन। मेरे पास इंट्रोवर्ट आएगा तो एक्सट्रोवर्ट बन के जाएगा, ये मेरी गारंटी होती है। मैं पूरा ट्राई करता हूँ, लेकिन बस ये है कि उसकी तरफ से भी उतना ही 100% आना चाहिए। 100 आप दीजिए, 100 मैं देंगे, हो गया 200%, और क्या चाहिए? तो समय दीजिए और अपने आप को ग्रूम करने के लिए हमारे पास आइए। तो पहले कम्युनिकेशन ट्रेनिंग हो गया, उसमें कुछ सेशन हम लोग अरेंज कराते हैं आपके लिए, आपके ड्रेसिंग को लेके होता है, मेकअप को लेके होता है। जब-जब मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ भी खराब है, मैं टोकता ही हूँ आपको। आई ऑलवेज़ बट इन, आई स्टॉप यू, आई ट्राई टू चेंज यू। आई हैव सीन पीपल क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी आल्सो। It doesn't matter, but once you reach there, you'll realize that how important was this for you. तो अपने आप को किसी भी ऐसे कैबिन क्रू ट्रेनिंग के चक्कर में मत डालिए। 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अपने बर्बाद मत कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी कंपनी आपसे कोई भी कैबिन क्रू का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगती है। कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक कीजिए अपने, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाइट देखिए अपनी, वो सब होने के बाद आप आइए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है क्रैक। लास्ट नहीं होने वाले का रीजन है कि उसने एफर्ट्स लिया ही नहीं है। वो अगर एफर्ट्स नहीं लेता है, वो कैजुअल है, ना प्लान बी लेके चल रहे हो कि चलो ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उठना, बैठना, सोना, दिमाग में पूरा दिन आपके एम क्लियर होना चाहिए कि आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू। योर लाइफ चेंजेस, योर एंटायर लाइफ चेंजेस। आई हैव सीन पीपल, दे कम फ्रॉम सच अ स्मॉल स्मॉल प्लेसेस लाइक खोरीबारी, जाबरा, नक्सलबारी, Gorubatham, places. These people, when they reach somewhere and when they send their photos to me, when they get their first salary, they buy their first iPhone, you know, and they're supporting their own family members. When they call me, I feel so good about that because the life changes completely. आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपके। अगर आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। 100% यू कैन क्रैक। WBCS हो, यूपीएससी हो, कोई भी चीज हो, it doesn't matter. You preparing your syllabus, that is different thing. Along with that, the communication skills play an important role. You can never take it for granted. मेरे पास टीचर्स आते हैं, they are very good with their subject, but when it comes to communicating with the parents, communicating with the children, to build that rapport, जब rapport build करने का मौका आता है, लोगों से connect करने का मौका आता है, उस वक्त आपकी communication skills बहुत काम आती है। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। तो ये था मेरा आंसर आपके कैबिन क्रू इंटरव्यूज के लिए। आने वाले दिन में मैं से कई वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें हर क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। हर इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर कैसे होता है। I will make my own answers for you, but I will appreciate, don't copy that particular answer. You make your own answer, modify that.
एनी हेल्प यू कैन कम। अच्छा, एक और चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाह रहा था, मैं चाह रहा था और लोग भी जुड़ जाएं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा है जिसने कोई कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, 1 लाख 1.5 लाख अपने बर्बाद कर दिए हैं, और अभी तक उसको कोई जॉब नहीं लग रहा, कि नॉर्मली ये सारे लोग ये कहते हैं कि 100% प्लेसमेंट देंगे आपको, प्लेसमेंट का वादा करते हैं कैबिन क्रू का, और धीरे धीरे आपको प्लेस कर देते हैं होटलों में, कोई भी 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल में कोई रिसेप्शन बन रहा है, कोई वेटर बन रहा है। तो अगर आपको यही काम करना था, तो आपने कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट में 2 लाख रुपए क्यों बर्बाद कर दिए अपने? तो अगर कोई आपका ऐसा है, तो आप प्लीज उसे मेरे पास भेजिए। I will give them free training from my side on communication, on developing their personality, and I will try to help them to get the desired job that they deserve. और सबसे पहले तो प्लीज इस चक्करों में मत फंसना, अपने पैसे बर्बाद मत करना। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि आते हैं, रोते हैं, लोन ले लेके उन्होंने पैसा भरा होता है, कहाँ-कहाँ से लोन लेके। एक एक लड़की आई थी, उसकी मम्मी तो टी गार्डन वर्कर है, उसने लोन लेके बच्ची का फीस भरा हुआ था किसी इंस्टीट्यूट में, अब तक जॉब नहीं लग रहा है। तो ये सब एक तरह से फ्रॉड है, इस चक्करों में मत पड़िए, अपने पैसे बचाइए, और सबसे पहले अपने आप को डेवलप कीजिए। कोई कंपनी आपको हायर करे तो क्यों करे, पहले वो देखिए, क्या आप में वो स्किल्स हैं, कोई कंपनी आपको हायर करे। नहीं है तो उसको डेवलप कीजिए, बिना डेवलप किए कैसे होगा। मेरे पास कई लोग आते हैं कि मैं आई वांट टू बी अ टीचर, टीचर के लिए भी कई लोग अप्लाई करते हैं। आप टीचर बनना चाहते हो, वंडरफुल, लेकिन आप सोचिए कि आप स्टूडेंट्स को क्या दोगे, आप में वो क्या स्किल है जो आप स्टूडेंट्स को साथ शेयर कर सकते हो। बुकिश नॉलेज है आपको, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बच्चा इंटरनेट में जाके, यूट्यूब में जाके सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसको। व्हाट एल्स यू कैन प्रोवाइड देम? द एल्स इज योर फ्रेंडली पर्सनैलिटी, your outspoken attitude, your rapport building, your good communication skills. So that package of personality that you offer to that child, that's what a child deserves in a teacher. Not कि एक रोबोट आए, आने वाले दिन में तो यू नो दैट रोबोट्स ही पढ़ाएंगे फिर तो। So this was also one of the answers I wanted to give you, communication skills के बारे में। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिए। I will take some questions here. It can be on any subject on English. If you want to ask something about personality, you can ask me that also. और इस सेशन को स्पेसिफिकली मैंने इंग्लिश और हिंदी में रखा हुआ है, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिया हुआ था कि जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग नहीं आ सकते हैं रेगुलरली, उनके लिए क्या? तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि संडे को हम लोग कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए और एक ऑप्शन हम रख रहे हैं कि इस तरह लाइव के माध्यम से अगर मैं हफ्ते में एक बार ऑनलाइन आके 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए कुछ ग्रामर के टॉपिक्स कवर कर दूं, थोड़े बहुत आपको अगर मैं कुछ टिप्स दे दूं पब्लिक स्पीकिंग पे, तो वो मेरी तरफ से मैं करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच अफसाना फॉर सेइंग योर वॉइस इज क्लियर। थैंक यू सो मच। और ऐसा पर्सनैलिटी को लेके प्रॉब्लम क्या आती है? एक क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी को लेके क्या इश्यू आती है? देखिए, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो जो थोड़ा सा डल टाइप की पर्सनैलिटी होती है, डल, जो, और एक होता है थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं जो सबसे नहीं खुलेंगे, वो अपना एक ग्रुप होता है, दे जस्ट वांट टू मिंगल विद दैट पर्टिकुलर ग्रुप। सो that reserve a dull kind of personality where they don't want to change. It's a big problem. Other personality is very outspoken, वो किसी के साथ भी आराम से मेलजोल बिठा लेते हैं, उनके लिए थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाती है। देखिए, अल्टीमेटली आप याद रखिए कि क्यों सीखते हैं हम कोई स्किल? Why do we learn a skill? ये भी एक स्किल ही है, पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल। I have to advertise it as English speaking course. English speaking course ही नहीं है ये, इट्स अबाउट पर्सनालिटी कोर्स। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आप एक ऐसे फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी बन जाएं, यू बिकम सच अ फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी दैट यू कैन adapt in any situation. If you sit with introverts, you have to be a person to motivate them and take them out and make them extrovert. If you're introvert, if you're with introverts, you make them extrovert. If you're with extroverts, you make them more, more aggressive. Let them talk more. So that's the basic idea.
You have to make that entire environment lively. इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, वर्क प्लेस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, दैट्स द बेसिक आइडिया. यू आर लिविंग, यू आर नॉट रोबोट, यू आर लिविंग ह्यूमन बीइंग. So wherever you go, you're spreading love, you're spreading the energy, the beautiful vibes. That's all about public speaking. Yeah. So मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ. You can write your name there who all have joined, and if you have any question there, you can ask me because I had kept 1 hour for this session. 30 minutes have already gone. So if you have any other question, you can please ask me. You can ask something about your personality also. I will take this question also. Okay. So if there is no question coming up, I have taken 3 more questions. I'll proceed with that. Okay. Uh, यहाँ पे क्वेश्चन आता है बार बार कि लैंग्वेज जैसे हिंदी से इंग्लिश हम लोग सीखते हैं, बांग्ला से इंग्लिश या नेपाली से इंग्लिश, तो हम लोग डायरेक्टली इंग्लिश में कब तक आ जाते हैं? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि नॉर्मली इफ यू कम फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम बैकग्राउंड और इवन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, होता ये है कि हम जब सोचते हैं, हमारा जो प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस, वो हमारे मदर टंग में होता है. बंगाली में होगा, नेपाली में होगा, या हम हिंदी हिंदी में सोचते होंगे. So that's what how we process our thoughts. So from there we have a translation to English. Now sometimes it is a literal translation. जैसे हिंदी में सेंटेंस आया, नेपाली में आया, बंगाली में आया, वैसा का वैसा उठा के हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं. तो देयर आर हायर चांसेस कि हम सोचते इतना फास्ट हैं अपने मदर टंग में कि उसको ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, वहां पे आई टेक यू स्लोली टुवर्ड्स अ प्लेस वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर प्रैक्टिकली इतना क्लियर हो जाता है कि आप धीरे धीरे इंग्लिश में ही सोचना शुरू करते हो. बेसिक सेंटेंसेस से, एकदम स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस से, slowly you move towards your intermediate level where you start processing in English and you start speaking good sentences. And once you start that, then there is no stopping. Then you can slowly move towards the advanced level. Your grammar becomes good. When you're making mistakes, you realize what mistakes you're making, and you self-correct it. So right now, in the first stage, I correct you. Every time you make mistake, I correct you. Sometimes you get baffled. अरे क्या गलती किया मैंने, सर ने टोका मुझे, आपको नहीं पता चलेगा. पर धीरे धीरे ओके, ये गलती किया मैंने, सर ने मुझे टोका. तो यू अंडरस्टैंड ग्रामेटिकली कि गलती ये हो रहा है. स्लोली स्लोली टाइम आता है कि अब मुझे आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि मैंने गलती कर दिया. यू स्टार्ट करेक्टिंग इट. नेक्स्ट स्टेज में गलती होगा ही नहीं, अंदर ही प्रोसेस राइट हो रहा है, तो गलती होने का चांस ही नहीं है. तो ये एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जिससे आप आगे बढ़ते रहते हैं. कई लोग जल्दबाजी में होते हैं, मेरे पास आते हैं, सर मैं 1 महीने में इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, सर मैं 2 महीने में इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ. सीख तो जाओगे, सिखाने में मैं आपको 1 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा. इट डजेंट मैटर. उसकी प्रैक्टिस करने में आपकी कैपेसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है. हर चीज को सीखने के लिए एक समय होता है. यू हैव टू गिव दैट टाइम. आप ज्यादा जल्दबाजी करके आप ज्यादा सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. इट इज यू ऑल्सो हैव अ कैपेसिटी टू लर्न. You cannot break that capacity. You have to be in that capacity of your brain and utilize it to the maximum. That's the thing you can do. Yeah, that's the thing. So, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस हियर. I have very few people I can see online today. You can write your names. If you want to comment something, you can definitely do that. I'll be very interested to know about your comments, what you want to say. आप कौन कौन लोग जुड़े हैं, आपका नाम लिख दीजिए एटलीस्ट. मेरे हिसाब से आई रेड मैसेज ऑफ विश्वजीत, अफसाना वाज देयर, तनुश्री वाज देयर. या, एंड प्लीज राइट योर नेम हियर, whoever is online. Yes, Vishwajit. Today Vishwajit has no work. He's he's connected with me. Prashanto is not there today. Vishwajit. Okay, Pranita. Pranita is also there. Hi, Pranita. How are you doing? Okay, Prashanto is not there. If you have any question regarding your journey
towards English. If you have any experience of past where you felt ashamed about your, not knowing English, अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो वो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं. Nikita is here. Hi, Nikita. So Nikita is, sir, I have a question. Yeah, Pranita, you can ask a question if you have here. I'm waiting for that. You can go ahead and ask question. मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे सेशंस में और रखूं जहां पर हम लोग क्लास में तो करते ही हैं और उसी को हम अगर लाइव करते तो काफी लोगों को बेनिफिट मिलेगा. आई विल ट्राई डूइंग सच सेशंस क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो मुझे बुरा लगता है कि मुझे ना बोलना पड़ता है कई लोगों को. और जब से मेरा वो वीडियो लोगों ने देखा कि सर आपने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं करना चाहिए तो कई लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं. मैंने आपको ये नहीं कहा कि ऑनलाइन क्लासेस मत कीजिए. ग्रामर के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं. मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस किसी काम की नहीं है. पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ही होता है कि पब्लिक को फेस करना. यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, सी द लाइव पीपल लुकिंग एट यू आई टू आई. So you have to have that eye contact. You need to have that, audience management skills. कैसे लोगों को मैं, engage करूँ. ये सब skills सीखने के लिए वो public platform में जाकर ही होता है. उससे आप online नहीं सीख सकते. तो मैंने यही आपको कहा था कि ग्रामर वगैरह आप सीख सकते हो लेकिन अगर कोई बोलता है कि पब्लिक स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग वो नहीं हो पाएगा. ओके, आई हैव सीन मेनी कैबिन क्रूज आर शॉर्ट हाइटेड, हाउ दे बिकम कैबिन क्रू. ओके, तो ये दिस क्वेश्चन आई गेट वेरी ऑफन कि सर मेरा हाइट 5 फीट है. मैंने कई शॉर्ट कैबिन क्रू को देखा है, वो कैबिन क्रू कैसे बन जाते हैं. देखिए, हमें मेरा मानना है कि आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि उसकी हाइट कम है तो वो कैबिन क्रू कैसे बन गई. एक एक बेंचमार्क उन्होंने उन्हें डाला हुआ है 5.1. तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसके लिए प्रिपेयर मत कीजिए. मैंने कहा था कि कैबिन क्रू जो 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 इंस्टीट्यूट होते हैं उसको ज्वाइन करके 1.5-2 लाख रुपए बर्बाद मत कीजिए. मैं कह रहा हूँ आप प्रिपरेशन करते रहिए. You are doing your education, never stop your education. You're pursuing your graduation, you do that. You can do it through distance. आप डिस्टेंस से करते रहिए, कॉलेज से कीजिए, जो भी कीजिए आप करिए, उसको स्टॉप मत कीजिए. तो जिनकी हाइट कम है तो वो इसको एज अ प्लान बी लेके चलिए. कैबिन क्रू को अपना मेन एम मत बना लीजिए. मेरे पास ऐसे एक दो स्टूडेंट्स आ चुके हैं. मैं उनका आपको, क्योंकि आप देखते हो कि ये बन गई, मेरे पास ऐसे हैं जो नहीं बन गई भी होते हैं. This girl was amazing, amazing, wonderful communication skill. I think one of the best communication skills in my training journey. She has wonderful human, wonderful skills, beautiful girl. Height was not getting qualified. She has given several interviews. She was not getting through. So मेरा ये मानना है कि आप ट्राई करते रहिए. अगर उसका हुआ है, किसी एक का हुआ तो आपका भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन साथ-साथ में जब आप अपना अपना जब जॉब, अपनी जो कोई और करियर भी आप चूज़ कर रहे होते हैं, तो कम से कम यू हैव अ बैकअप प्लान. लाइफ इज़ अबाउट बैकअप ओनली. You have to create some backup. For some people, I'm not saying for everyone. For others who think they want to be, they want to be. No settling. No settling on a lower ground. You have to try and get that particular job. अच्छा, एक और क्वेश्चन था, ये हाइट को लेकर मैंने बोल दिया आप प्रिपेयर करते रहिए. एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जॉब स्टेबल है. ये क्वेश्चन एक मैंने लिया था. सॉरी, आई फॉरगॉट टू आस्क दिस. इज कैबिन क्रू जॉब स्टेबल. एक समय के बाद तो हम जॉब नहीं कर सकते हैं. दीज आर ऑल मिसकंसेप्शन. ये किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको. ऐसा कुछ नहीं होता है. Till the time you're well maintained, your BMI is in control, nobody is going to remove you from the job. कैबिन क्रू जिंदगी भर आपको फ्लाई करने की जरूरत नहीं है. देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल. ग्राउंड स्टाफ है, टिकटिंग है. देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स यू कैन टेक ट्रांसफर टू. ऐसा नहीं है कि कैबिन क्रू ही होता है मतलब एयरलाइंस में बहुत सारे जॉब होते हैं. ट्रेनर का जॉब होता है. ऐसा कुछ नहीं है. वो आप कई लोगों ने रॉन्ग आपको बातें बोली होती हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. ये बहुत ही सिक्योर जॉब है, बहुत ही अच्छा करियर है, मॉनेटरी वाइज बहुत अच्छा है, तो सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है. देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब. I'm always this. For girls, amazing. There's no other thought about it. Especially nowadays, as you know, that you want to have a glamorous and beautiful career to see the world. So all these things you will get it. But again,
There's a price to pay. You need to give time. Time. Is the cabin crew training certificate required to become a cabin crew? Wonderful question. ये कई लोग दुनिया भर के कोर्सेज चलाते हैं, बोलते हैं कि हम आपको cabin crew का ट्रेनिंग देंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे. There is no need for any cabin crew training certificate. अगर कोई कंपनी cabin crew ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांगती तो इंटरव्यू पे लिखती. आपने जब भी किसी कंपनी का इंटरव्यू देखा है तो वो लोग क्या एडवर्टाइज करते हैं? हाइट, minimum qualification, no visible marks, good communication skills, हिंदी, इंग्लिश, बस. कोई भी कैबिन क्रू ट्रेनिंग की आपको जरूरत नहीं है. कोई भी ट्रेनिंग जरूरत नहीं है आपको. मेरे इंस्टीट्यूट से कई लड़कियां बन चुकी हैं, कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको. हम लोग क्या कराते हैं? हम आपको देते हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन की ट्रेनिंग. आपका कम्युनिकेशन ठीक करेंगे, आपका लैंग्वेज अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी. हमारे पास 50 बार आप इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दे चुके होंगे. एंड यू विल बिकम कैबिन क्रू वन डे. कैन एनीवन बिकम कैबिन क्रू आफ्टर 10th? नो. 10th के बाद कैबिन क्रू नहीं, 12th के बाद. उनका जो बेंचमार्क है इज 12th. यू नीड टू हैव 12th pass. You have to have a 12th certificate. 18 years old, 12th certificate mandatory. वो चाहिए. और कुछ ऐसे एयरलाइंस हैं जहाँ पे आपको परसेंटेज का रिक्वायरमेंट भी होता है अबाउ 60. जैसे एयर इंडिया, दे नीड 60 प्लस परसेंटेज इन योर सर्टिफिकेट. तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं. उसके लिए आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. गूगल में डालिए, इंफॉर्मेशन आ जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ इंटरव्यू हो रहा है, सब आपको मिल जाएगा. कोई हेल्प चाहिए हमें व्हाट्सअप कीजिए. आई विल हेल्प यू आउट इन दैट. वी डोंट चार्ज एनी मनी फॉर दैट. Help is free. Yeah. Okay. Any other question? Please ask me. तो मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के बहुत सारे. हाइट को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं. मेरे पास तो ऐसे लोग भी आए हैं जिनको लगा था कि कैबिन क्रू के लिए ट्रेनिंग किए बिना कैबिन क्रू बन ही नहीं सकते हैं. देयर आर मेनी पीपल हु केम, दे हैव वेस्टेड देयर मनी एंड देन दे हैव कम टू मी. मेरे ही क्लास में एक लड़की है. आई शुड नॉट टेक हर नेम इन द मॉर्निंग बैच, बट इट्स ओके, आई टेक हर नेम इज अनीशा. She has already paid 30,000 rupees in one institute, and she was already coming to me to learn English, and also for cabin crew. And I told her that really how somebody can brainwash you. Then she felt so bad about it, and the damage is done. They will not refund your money. Nobody refunds anyone's money, and it's very injustice for that. Yeah. Eligibility criteria international. Okay, so the eligibility criteria is graduation. For ground staff, if you want to go for any ground staff, the benchmark is graduation. You need to be a graduate. That's the criteria. For your ground staff, it can be for international or domestic. That's mandatory. Siliguri, normally we don't get much of the openings here. Very rarely we get, but you keep tracking. If you have some openings, definitely go for interview. But again, graduation is mandatory. Yes, if you have any other question, you can ask, please. So in between, I was telling about that misconceptions. तो लोगों की गलत फहमियाँ बहुत सारी हैं. तो जिस तरह से पैसे बर्बाद कर ले रहे हैं लोग, वो आप मत कीजिएगा. बुरा लगता है कि उस पैसे से आप कितना कुछ कर सकते हो, और कई कई लोगों के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है. और सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ ये फ्रॉड होते हुए, ये लोग कॉलेजेस में जाते हैं, कॉलेज में जाके इसको प्रमोट करते हैं. मेरे पास ऐसे कई कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते सर हमें विश्वास करना पड़ा, पैसे बर्बाद करने पड़े, क्योंकि ये लोग हमारे कॉलेज में ही आके एक क्या बोलते हैं सेमिनार दे रहे हैं कि हम आपको कैसे कैबिन क्रू बनाएंगे. तो पेरेंट्स भी भरोसा कर लेते हैं. तो ये इस टाइप के ट्रैप में मत फंसिए. और मैं ये बात आपको बोलूंगा, तो आप कैबिन क्रू बनना चाहें, कोई भी जॉब करना चाहें, आप पहले जाके गूगल तो कीजिए, यूट्यूब में इंफॉर्मेशन निकालिए, सब कुछ तो अवेलेबल है. हाँ, पहले जमाने में कोई किसी को ठग रहा था, बेवकूफ बना रहा था, that was okay. That time information was not available. Now information is at your fingertips. Everybody has smartphones, 4G, 5G connection. Just get the information.
अगर मैं कोई जॉब के लिए प्रिपेयर करूंगा तो मैं जॉब का अंदर तक सब जान जाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी जाके पैसे बर्बाद करूंगा। ऑन 8 April, Indigo conduct an interview in Siliguri. Yeah, Indigo keeps on conducting interviews. Yes, महीने में एक बार, दो बार तो इंडिगो के इंटरव्यू होते ही हैं, डेफिनेटली। आप अपने आप को एनालाइज करने के लिए जरूर जाना चाहिए आपको। यू शुड गो, गिव एन इंटरव्यू, यूल अंडरस्टैंड। When somebody comes to me for admission for cabin crew interview preparation, I suggest them at least go for one interview. At least give one interview, you'll understand. You'll see others also. How others are, how is my condition, where am I lacking? So self-analysis is very important. Rather just joining any institute, that's not the idea. Sir, how to grow our personality? Okay, I'll take this question. Now, first of all, what is personality? Personality is actually that you have acquired. तुमने अक्वायर किया है कहाँ से? अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने कलीग से। तो जो भी आपका एनवायरनमेंट था उसको लेके आप ये जस्ट वन सेकंड। ओके, आई विल कम टू दैट क्वेश्चन। तो पर्सनालिटी के बारे में बता रहे थे, विश्वजीत ने पूछा। तो पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन लाइए अपने अंदर। एक भाव लाइए, विटनेस का, ऑब्जर्वेशन का। देखिए, यू हैव टू सी द पीपल यू एडमायर, द पीपल whom you think they have good communication skills, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनके बॉडी लैंग्वेज देखिए। आई एम नॉट सेइंग टू कॉपी देम, आई एम सेइंग टू ऑब्जर्व देम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग somebody and observing something. So when you start observing, you understand that, okay, this is what I lack. This is what I should have in my personality. And you slowly you adapt that particular, sorry, excuse me. You slowly you adopt that particular personality. And your personality will start reforming. बोलने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, कन्विंसिंग स्किल्स आपकी कैसी है, लिसनिंग स्किल्स आपकी कैसी है, आप क्या लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं, क्या आपकी बात में वो वेट है जो किसी को बोलते हैं, क्या उसमें वजन है। तो ये सब कुछ एक मिल के एक अच्छी पर्सनैलिटी बनती है। I'm not saying a pleasing personality. In corporates, when you see you have a pleasing personality, जिसको हम बोलते हैं buttering personality, that's not the idea. You need to stand for yourself when it is needed. You need to take favor when it is needed. Oppose. So you have to have a balanced personality, a balanced all-round personality. That's what you need, and that's what life is all about. If you don't have balance, then what happens? This is what happens, right? So once this thing goes up, this goes down. So up and down is not the idea. Having in sync in the right way to have a right balance, that's about life. So personality में बहुत सारे elements होने चाहिए। कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ कड़वा है, कुछ नमकीन है। You need to have all sort of colors in your life, and that's called personality. Yeah. तो मेरे ट्रेनिंग सेशन में जो लोग अटेंड करते हैं वो जानते हैं कि मैं सब कुछ रखता हूँ, सब कुछ। We talk about everything, no matter what. We talk about culture, we talk about religion, we talk about politics, we talk about media. That's how that everything impacts our life. So we have to talk about everything. So as a trainer, it's my responsibility that when you come to me, I need to give you everything that I have. So when you go from here after 6 months, 8 months, 1 year, you will see a complete transformation in your personality. एक पूरा change आप दिखेंगे, एक spectrum आपका बदल चुका होगा. And that's what I want from my training. Yeah, that's what I want from my training. So that's what is answer that Vishwajit asked. Okay, what and how to develop personality? Observing. Observe the great leaders, great personalities. Observe and implement that. Yeah. So one question was asked about the chances of people who have height that is 5 feet. So again, there are very clear information on the website of all the companies that the height criteria is 5.1. मेरे इंस्टीट्यूट में कोई भी आता है, पर कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे कैबिन क्रू ट्रेनिंग का, उन्होंने उनको ये तक नहीं बताया है कि आप हाइट को क्वालिफाई नहीं करते, बताया ही नहीं है। एक लड़का आया था, he has this big patch on his face right here. He came from one of the very reputed institutes. He has paid 1,70,000 for cabin crew training. This
big pat on his face right here. This institute have taken admission. They have taken his admission and never told him that no, you cannot become a cabin crew because you have this big pat on your face. Height. A girl from Darjeeling, she messaged me on my Instagram. She gave so many interviews. Every time in the BMI round, she's getting rejected. She has also paid 1,80,000 in one reputed institute here. So, for me, these people have no morals, no ethics. इनका दीन ईमान कुछ नहीं है. मरी हुई आत्मा है. इनका कुछ नहीं हो सकता. ये बस पैसा लेने के लिए बैठे हैं. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ से पैसा लेते हैं ट्रेनिंग का. फिर बेचारा उस बच्ची को किसी होटल में प्लेस करते हैं. फिर होटल से पैसा लेते हैं कि हमने इनको यहाँ प्लेस कर दिया. तो यहाँ से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है. That's the reality of these people. I can save my people as much as possible, especially people coming from the hills. They they don't know what is the reality of such institutes, so they just spend money like water. I feel bad. They're tea garden workers, taxi drivers, yeah, retired army people, retired police. So I feel very bad, very bad. Sir, make a video about the public speaking. Yes, I will definitely make one video on public speaking. I have made several videos on that also. On my channel, you can check it out. So public speaking is a skill, as I said earlier. You have to learn this skill, but before learning the skill, you need to have an open attitude. मेरे इंस्टीट्यूट में मैं बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेता हूँ मेरे ट्रेनीज को कि कौन कितना ओपन है सीखने के लिए. द फर्स्ट थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई ट्रेनीज टू ओपन देयर हार्ट. ओपन देयर हार्ट. तो जब तक आपका हार्ट खुला हुआ नहीं है, आप एक्सेप्टेंस लेकर नहीं आए हो, तब तक नहीं होने वाला है. आप नहीं सीख पाओगे. आई टीच फ्रॉम माई हार्ट. I love teaching. This is my passion that I do. I have left my corporate. I've left my industry where I come from. I've devoted my life for this particular institute, this particular training. It's my passion. I love talking to people. I love training people. Same love when I get from my training, then the magic happens. Then the magic happens. From last 12 years, I've trained more than 7,000 people here, single-handedly. Yeah. So that's what I'm telling about. So it's all about give and take. Open your heart, accept, drop your ego. I want to learn. I want to take what it has. I want to take. Then see the magic. You will develop your skills. You will develop. So normally, I never never like to go for live sessions, but as the demand came, people have been requesting for a very long time. During lockdown period, I took some live classes, online classes, though I never wanted to do that. But that was an urgency and I had to do it. But if you ask me genuinely from my heart, I don't trust this online platform. For me, physical form is the best one, where you can share the vibe, you can share the energy, you can see the person, you can talk, and there's no interruption. The best thing, and mark my words, in my class, the 2 hours flies like this. That's how it is. And okay, so it's already getting too late. It's been I think 1 hour we have been interacting. If you have quick some questions, take it. Otherwise, I'll wrap up and hopefully I will intimate you guys when I'll have my next session. And one more thing, I will upload some grammar videos frequently in a very easy language so that the people who cannot join for grammar sessions, they can at least revise that. I'll do that very often now. So any question in the meantime before we end the session? I can see some people here. Vishwajit saying thank you. Thank you so much, Vishwajit, for tuning in, joining. And I hope we'll meet tomorrow. We have a class, yeah?
So since we're not getting any question here, I would like to end this session. It was really nice talking to you guys, and I look forward that in the coming days we'll have more of such sessions. And if some people were not able to join this session, if you have any questions, my WhatsApp number is there. You can drop in your questions, whatever you have. Yeah, no, but one more thing. Sorry, many people call us and they ask about the fees. How much is your fees? Normally, I don't discuss fees on the call. That's not the right idea. मेरा ये मानना है कि आप कॉल जब करते हो तो सिर्फ फीस जानने के लिए कॉल नहीं कर रहे होते हो। आपको ये भी जानना होता है कि कोर्स क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है, मुझसे मिलना होता होगा, मैं आपको समझ सकूँ आपकी कंडीशन क्या है। तो ये सब जब होता है तो एक फीस कोट की जाती है। So it's like we're not selling potatoes and tomatoes and आप पूछते हैं सर आपका रेट क्या है? It's very cheap and I think कई लोगों ने ऐसा खराब किया है माहौल मुझे पता है। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने ये काम खराब कर रखा है। But I don't want to belong to that particular league. So I'm not from there. So मैं जब भी कोई कॉल करता है सर फीस कितना है तो I don't prefer telling you fees and all those things. मुझे आप पसंद आए, आपका एटीट्यूड सही है, आप ओपन हो, तो there is nothing about fees. We can have discounts also. It's all about that. But the point is that how much you are interested to learn this skill. It's all about that. Yeah. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much जो लोग जुड़े और thank you so much. In coming days we'll have more such sessions. And it's already 10 o'clock. Have a good night. And I really appreciate the time that you have devoted to go to this live session. Thank you so much. And keep speaking, just speak. Thank you so much. Good night.